jagi jinda jagati, jagi jinda jagati, akasone nipaya veriya, sone nipaya veriya. Gaya Guru Kirpa, Gaya Guru Kirpa, Rakiya Satriya, Rakiya Satriya. Yo mangeta kure apanete, soy bebe. Yo mangeta kure apanete, soy bebe. Chature visa kino vale apana. Sire upare kardanyo, kirpa kata ke havalo kale kino, das kantu ke vedaryo, yo mangeta kure apanete, soy bebe. Hari jane rake Guru Govinda, rake Guru Govinda, cantela he ave guna sabe mete, diale pure ke pate shinda, yo mangeta kure apanete. Soy bebe. Yo mangeta kure apanete. Soy bebe. Yo mangeta kure apanete. Soy bebe. Nana queda se mukete yo bole, iha uha sache ove, yo mangeta kure apanete, soy bebe. Yo mangeta kure apanete. Soy bebe. वो बोलेंगे कृपाल सिंह जी। हाँ, उनको देना चाहिए था। हाँ, 2 मिनट बुलाए। हाँ, डेविड यू कैन कम एंड टॉक। ओ चेयर पे। ओके, थैंक यू। You want chair? Okay. Okay. Thank you. I'm the old one. David, talk close to the microphone.
थोड़ा साउंड करना. ओके, थैंक Yes, can you hear me? यू. It's a great gift to be asked to speak in front of Satguru. It's too much for me to understand. I was given the great gift from Kirpal when I was a young boy, many years ago. But this gift has been given to me again, Usachi, and now again, Rubahachi. That's the biggest, the best thing I can say. I could talk a long time about my experiences with Master, but it always is new for me. They have to break through the stone wall of the ego. Very strong. It takes a Satguru to do that. Kirpal came to the town I grew up in, and I was very friendly with Russell. Russell and I went to the church there, and I didn't find really what I was looking for in my religion. I always was a seeker after God, but I also was a seeker after pleasure. So I left and went all around the world and lived in many different places, did many different things. The Master always brought me back. And I'm so grateful for that. So many experiences at the feet of the Master. I really don't have any more to say than that. Thank you, everybody, for the honor, to the brothers and sisters here that give me the honor to speak in front of you. It's a great honor for me. Thank you very much. Well, I just have a few words of Kirpal that came to me. Thank you. In 1970, he was talking about the time of the Kali Yuga that we're in. And he said then, there will be more fragrant saints. And then there's a reading of his writing. He said, the living master is just like a blooming tree laden with fragrant flowers and luscious fruits. Blessed indeed is one who happens to meet such a master. And I think we are all fortunate to be here in that situation. Thank you, Babaji, for everything. Thank you. आज उनका पुण्यतिथि है. तो संत कृपाल सिंह महाराज जी का दर्शन एक ही बार हुआ था बॉम्बे में. वो भी शायद 73 में 1973 जब हमें पहला सत्संग मिला तो आए हुए थे और साइन के पास में उनका प्रोग्राम था. हाँ, और हम उस समय कुछ संगत के साथ गए थे तो एक ही बार उनका दर्शन हुआ था. I had the opportunity to have the darshan of Sant Kirpal Singh Ji in 1973. That was just when I had come into the fold of Sant Mat. And Sant Kirpal Singh Ji had a program around Sion, somewhere near Sion in Mumbai. King Circle में होता. Near King Circle. So some of the satsangis were there and I accompanied them. And we attended and I got the good fortune of the darshan of Sant Kirpal Singh Ji then. और बाद में फिर सोमनाथ महाराज जी के शरण में चले गए. बेंगलोर आश्रम में तो जाने का मौका नहीं मिला. कहते हैं कृपाल सिंह महाराज एक बड़े उदार स्वभाव के थे. वो बड़े पढ़े लिखे थे
और अपने जो पेमेंट खर्चा माने उनका पेमेंट आता उसमें काफ़ी लोगों को जो पढ़ नहीं सकते थे बच्चे लड़कियां उनको मदद करते थे। तो एक दिन उसी लड़कों में जिनको उन्होंने काफ़ी मदद दिया था पढ़ाई के लिए वो एक बड़ा ऑफिसर बना। तो शायद कुछ दर्शन के लिए गया तो उनके चरणों में कुछ सेवा रखा पैसा। तो कहते भाई ये क्यों? तो कहते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ खर्चा किया मैं तो थोड़ा सेवा दे रहा हूँ। तो कहते नहीं उस समय आपने हमें पिता माना था ना, तो आज मैं पिता नहीं रह गया क्या? आज मुझे पैसा दे के दूर कर रहा है। तो उनका स्वभाव बहुत है, काफी लोग मदद करते थे। जब सावन सिंह महाराज और बाबा सोमनाथ कृपाल सिंह महाराज ये दोनों साथी थे। 7 साल बाबा सोमनाथ महाराज ने जब ब्यास में सेवा किया ना उस समय ये दोनों साथ में बहुत प्रेमी, दोनों का बहुत अटैचमेंट था। तो बाद में जब सावन सिंह महाराज शरीर छोड़ा उस समय आप वियोग में चले गए ऋषिकेश के जंगलों में। आप वियोग गुरु का सहन नहीं कर पाए और काफी दिन आप ऋषिकेश के जंगलों में बिताए भजन सुमरन में। और जाके रात भर गंगा नदी ऋषिकेश के पहाड़ी से ही निकलती है, वहां से स्टार्ट है, तो एकदम ठंडा रहता है पानी। लेकिन आप रात को 11:30-12 बजे जाके नींद आता है बोल के इतना पानी में खड़ा होके और ध्यान करते थे। तो एक बार 12 बजे जा रहे थे भजन के लिए, तो एक पुलिस वाले ने देखा कौन है रात को घूम रहा है, तो इनको पकड़ लिया। बोलता आप कहाँ जा रहे हैं? बोलते भजन करने के लिए जा रहे हैं, आपको आना है तो आओ। तो बोलते कहाँ पे? गंगा में ये खड़ा होके भजन करना है क्योंकि नींद आता है। तो बोलते हो तुम्हारे को ही मुबारक। वो छोड़ दिया। तो कहते हैं कि आप गंगा में जाके इतना पानी में खड़ा होके और रात भर माने जितना हो सके उतना सुमरन ध्यान करते थे। आपने एक कठिन साधन किया और बाद में आके उन्होंने दिल्ली में सावन और जो भी आश्रम है दिल्ली का उन्होंने वो निर्माण किया। बाद में जब कुछ लोगों ने उनको ढूंढा वो आए तभी वहां आके सत्संग चालू किया। तो आपका स्वभाव भी बहुत सीधा साधा था और गरीबों को ज्यादातर मदद देते थे। एक बार उनका दूसरा नंबर का जवान लड़का गुजर गया जो 14-15 साल का था। तो उनके दोस्त राजा राम सर्राफ जो आगरा के एक बड़े सर्राफ थे, बड़ी दुकान थी सोने चांदी की, वो उनके दोस्त थे। तो उन्होंने सोचा कृपाल के ऊपर बड़ा पहाड़ दुख का पहाड़ पड़ गया क्योंकि जवान लड़का गुजर गया, चलो तसल्ली दे के आएंगे। तो वो उनके घर आए तो उन्होंने देखा वो हमेशा कृपाल सिंह महाराज के मुख पे देखते थे कि कोई दुख का संदेश है क्या, कुछ आंसू बहेगा। लड़का जवान मरा लेकिन कुछ नहीं, जैसे हंसते हुए कारोबार कर रहे थे, सबसे हिल मिल रहे थे और सब ये तो बोले अरे इसको तो कोई दुख ही नहीं, मैं तो इनको सांत्वना देने के लिए इतना दूर से आया और इसके मुंह पे तो दुख का लेस भी नहीं। तो बाद में सोचा चलो मुर्दा उठाने के टाइम 2 आंसू गिरेंगे। तो जब मुर्दा आरती उठाई ले जा रहे थे मसान में जलाने को, आप भी साथ साथ चल रहे थे, मामूली बात करते जाते थे, कभी एक आंसू भी नहीं आंख से गिरा। तो बड़ा आश्चर्य हो गया राजा राम सर्राफ। तो बाद में मुंह पे ही देखते आया कि शायद हो सकता है घर पे जाने के बाद उसके बिछोए का दर्द हो, कुछ नहीं। तो बाद में उनसे रहने को नहीं हुआ। राजा राम सर्राफ कहते अरे यार, वो दोस्त थे, अरे यार तेरा दिल पत्थर का है क्या? इतना जवान लड़का घर में गुजर गया और तेरे मुंह पे कोई दुख का लेस भी नहीं, एक आंसू भी नहीं उसके लिए। तो ये हंस के कहते हैं कि सर्राफ वो मेरा लड़का नहीं था, वो परमात्मा का लड़का था।
उन्होंने उतने दिन के लिए मेरे पास भेजा था, जब उसका उसने ही बुला लिया तो मैं क्यों दुख करना। हाँ, तो कहते हैं कि आपके जीवन चरित्र बड़ी विचित्र है। हाँ, और जब कृपाल सिंह महाराज ने शरीर छोड़ा तो वहां से संगत ने सोमनाथ महाराज जी को भी लेटर लिखा था, उस समय हम आश्रम में थे। तो क्योंकि महाराज जी चोला छोड़ गए हैं, अब यहाँ देख रेख करने का कोई ऐसा है नहीं, हम आशा करते हैं आप उनके दोस्त हैं, आप आके जाएंगे बोल के। तो महाराज ने उनको लेटर का जवाब दिया कि भाई हमारी उम्र हो गई, हम हमारा चलना फिरना मुश्किल है, अब हम बाहर का प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे। तो ये उनके जीवन चरित्र में थोड़ा सा भाग जो जानकारी है मैंने उनको बता दी है। Kirpa Singh Ji Maharaj was a great intellectual. He was very learned, and I remember him as a very generous person. And from his income, he used to donate monies for education, especially of small girls and boys, and pay for their books and for their education. जो नहीं पढ़ सकते। So for those who could not afford it. So once later, one of the boys who had been given donations by Kirpal Singh Ji Maharaj, he grew up, and when he went to meet Kirpal Singh Ji Maharaj, he placed some seva at his feet, and then Kirpal Singh Ji Maharaj asked him why he is doing that. So he said, you have always helped me, and you have paid for my education. So this is a very small seva that I would like to offer. So then Kirpal Singh Ji Maharaj told him that you are my son, and I was paying for you as my son. So now you are giving this. Am I not continuing as your father? So that's how he was known to be very generous throughout his life. And he, after I got that one darshan, I went to Somnath Babaji's place in Bangalore. After that, I did not get an opportunity to go and see him. But Somnath Babaji and Kirpal Singh Ji were they were very, very good friends, because Somnath Babaji had also stayed in the ashram in Bias, and during that 6 or 7 years when he was there, he and Kirpal Singh Ji Maharaj, they got to know each other very well, and they were very good friends. So after Savan Singh Ji Maharaj left his body, after that, the pangs of separation were very strong, and Kirpal Singh Ji Maharaj went in the northern parts of India, and there in Rishikesh, he used to do his meditations. He would stand in the river, uh, and the river Ganges comes there, and it is very cold water. So he used to stand uh, early morning in that very cold, freezing water, and do his meditations. So once some policeman had also stopped him and asked him where he was going, and he had told him that I'm going to the river to do meditations. So if you want to join me, you can join me. So then the policeman told him, no, you can please carry on and do your meditation. So that way, uh, also he had a very unique life where he was very well known, and one of his sons also passed away at the age of around 15 or 16 years, and that was a great tragedy that befell the family. And one of his friends, Saraf, who was from Agra, Rajaram Saraf, he felt he was a good friend of Kirpal Singh Ji Maharaj, and he felt that I should go and express my condolences and give him support in this hour of great tragedy that he has gone through. So when he came and visited Kirpal Singh Ji Maharaj during the time of the cremation, he saw that there was no sign of remorse or sadness on the face of Kirpal Singh Ji Maharaj. He was going about in the normal routine way.
and he felt that maybe not now, a little later perhaps he will feel that sadness, and I will support him. So when they took the body towards the crematorium, also there was Kirpal Singh Ji Maharaj did not show any kind of um, uh, sadness or remorse. And again, Saraf was quite surprised, and even during the cremation, he was quite normal. So Saraf later asked him whether he had a stone heart, because it seems that there was no kind of sign of remorse for such a great tragedy that his son uh, had left him. Then Kirpal Singh Ji Maharaj told him that he was not my son. God Almighty gave him to me, and he took him. So, so there is no reason for me to be sad in that. So such was his greatness, and such was his understanding uh, of everything. So we are indeed fortunate to have someone as great as Kirpal Singh Ji Maharaj, in who has touched some part of our lives. And whatever I remember, little bit I've related that. Uh, so, so today being the day on which he had left his body, so in his remembrance. Sorry, yeah, I missed that. Thanks. हाँ, So one more thing, during when Kirpal Singh Ji Maharaj left his body, the uh, the Sevadars there, they wrote a letter to Somnath Babaji in the ashram. हाँ, That दिल्ली आता that was in 1974. So they wrote to him and requested him, because there was no one else to take care of the ashram. I mean, Kirpal Singh Ji Maharaj, after he had set up an ashram in Delhi. So Somnath Babaji then replied to them saying that he was also quite old, and it would be difficult for him to manage that, as travel was difficult, and he wasn't traveling much. So that is, so he had written back like that. दाम अपने चलो बाई पराए देश क्यों रहना दाम अपने चलो बाई पराए देश क्यों रहना ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है. This is the Bani of Param Sadguru Swamiji Maharaj. स्वामी जी महाराज इस वाणी में इशारा देते हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना. कहते हैं आप इन सब आत्माओं को संबोधित करते हैं कि आप अपने देश चलो, ये पराये देश में क्यों रहना, क्योंकि यहाँ ये देश आपका नहीं, ये काल और माया का देश है, सुख दुख का देश है, जन्म मरण का देश है. आपका देश सतलोक सचखंड है, जिस देश में जन्म मरण नहीं, काल और माया नहीं, सुख और दुख नहीं, परम आनंद का देश, जहाँ अमृत की बरसात होते रहती है और ये आत्मा परमात्मा के साथ बड़े आनंद में रहती है. Swamiji Maharaj addresses everyone, and he tells them that you let us go back to our true home. Let us go back to our true world. This world is not ours. This is the world of Kala and Maya. It's the world of life and death. It is the world of joy and sorrow. And this is not our true world. Our true world is in the lap of God Almighty. It is a world where it rains nectar, and it is a world where we have perpetual bliss. So let us go back to that true world of ours. Let us leave this world of others and go back to our true world. क्योंकि हम
शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, शरीर को चलाने वाले हैं। हम आत्मा परमात्मा के बेटे हैं। आत्मा न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है, और ना कभी 84 में भटकती है। आत्मा पवित्र है, निर्मल है। ये काल ने मन और आत्मा का गांठ मार दिया है। मन जो है कर्म करवाता है, कर्मों की मैल मन पे ही चढ़ती है, और मन के साथ में आत्मा 84 का चक्कर लगा रही। अगर ये गांठ खुल जाए, कोई भी ताकत नहीं जो आत्मा को यहाँ बांध सके। So we are not this body with which we are identifying. We are the soul which runs this body. And the soul is not subject to destruction, unlike the body that it is driving now. The soul is immortal. It has no beginning, no end, and it is infinite. And the soul has come into this world, and in this world Kal has tied a knot between the soul and the mind, and it is because of that knot that the soul has got entangled in this world, because the mind is going in circles in this ocean of life and death in this world, and doing all kinds of karmas, and whatever karmas it is doing, those are accumulating on the mind. But because the soul is tied with the mind, it has also to go and suffer the same fate as that of the mind. कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा भी शब्द और प्रकाश रूप में है, कोई शरीर नहीं। आत्मा भी शब्द और प्रकाश रूप में है। जब हम 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आते हैं, हमारी तीसरी आंख खुलती है, तो हम देख सकते हैं आत्मा यहाँ बैठी हुई है, और यहाँ से शरीर को चेतन किया है, और वो बिंदु के रूप में है, शब्द और प्रकाश रूप में है। So the holy sound current is in the form of sound and light, and so is the soul. It is in the form of sound and light. When we open our third eye, we first experience and see our own soul, which is in the form of a round shape of light and sound, and it is sitting at the eye center, and the soul from there is uh, illuminating the entire body with the pranas. So it is sitting at the eye center. इसीलिए महात्मा कहते हैं कि अपने धाम चलो और वहां जा करके अपना काम करो। And so therefore Swamiji Maharaj says that uh, you should go back to your true world and do your own work. काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं पसना। नाम गुरु का समाले चल, यही है दाम घट बदना। तो कहते हैं कि जो सदगुरु ने आपको नाम दान दिया है जपने के लिए, और वही कमाई करो, वही धन बढ़ाते जाओ, इकट्ठा करो, जो धन आपको इस भवसागर से मुक्त करेगा, अपने बिछड़े पिता परमात्मा से मिलाएगा। हाँ, कहते ओ नाम रूपी धन, वो जमा करते चलो। He says that that naam which has been given to you by your masters, you do the practice of that naam, you collect the wealth of that naam. It is that wealth which is going to help you to go back to God Almighty and get you to manifest God Almighty. So that is your work. Your own true work is to collect the wealth of that naam. कहते हैं बाहरी धन कोई काम नहीं आएगा। अगर हम लाखों करोड़ों जमा कर लें, किस काम का? क्योंकि जाने के समय हमारे साथ कुछ आता नहीं। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाते हैं। Outside, the collection of wealth and possessions is of no use, because we have come empty handed in this world, and we will be leaving this world empty handed. So stop that pursuit of trying to amass all the possessions outside, and focus on collecting the wealth of Nam. लेकिन
उसको जमा करने के लिए जो भी कर्म अच्छे बुरे इंसान करता है वो कर्म का गट्ठर जरूर साथ जाता है, लेकिन सामान और धन दौलत नहीं जाती है। So, in pursuit of collecting all those possessions, the possessions will be left behind, but whatever we have done as karmas, whatever deeds we have done to collect those or amass that wealth or get those possessions, that those karmas will go with us and we will have to redeem those karmas. तो इसीलिए महात्मा करते हैं आप अपने देश में जाओ और अपना काम करो, यहाँ पराये काम में नहीं फंसना। यहाँ जो है जो भी कुछ कर रहे हैं ये दूसरों के काम है। बाल बच्चे का पालन पोषण उनका काम हो गया, नौकरी धंधा कंपनी का काम हो गया, और व्यापार बिजनेस दुकान का व्यापार काम हो गया। हमने अपना काम क्या किया? जिस काम के लिए इतना सुंदर समय परमात्मा ने मानव शरीर दे के भेजा था। So he says that don't focus on doing your own work and not the work of others, because here whatever we are doing, it is work of the others. If we are taking care of our families, then it is the family's work, and if we are doing our service or we are doing a job, then it is the work of the company, or if we are doing a business, then it is the work of business. So all these are things that we are engaged for others and not our true work. जगत का रंग सब मैला, दुलाले मानय कहना, भोग संसार कोई दिन के, सज में त्यागते चलना। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं जगत का रंग सब मैला। कहते हैं ये दुनिया में जो कुछ प्रेम प्यार दिखाई देता है रंग, ये कच्चा है, मैला है, ये सच्चा नहीं है। महाराज सोमनाथ महाराज छोटी सी कहानी बताते थे। एक बार एक बुढ़ी इकलौती लड़की और वो गुजर गई, और बुढ़ी को मालूम हुआ तो वो रोते धोते अपने गांव से, उसकी एक छोटी लड़की थी, दोनों साथ में निकले और गए, और वहां पे देखा तो भीड़ भाड़ सब लगा हुआ था, सब रो रहे थे। गांव के नजदीक जाने के समय ये लोग भी रोना चालू किया और गए, खूब रोया। तो लोग कितना टाइम रहेंगे, और कुछ लोग आने वाले थे, चले गए तो सबके लिए खाना बनाया था ना, इतना बड़ा डेक्सा बाहर पड़ा हुआ था, तो सब लोग चले गए। वो बुढ़ी अकेले बैठ के रो रही थी लड़की के पास। हाँ, इतने में एक गाय वो डेक्से में मुंह मारा ना, वो फंस गया उसके ऊपर। हाँ, तो वो जो है, हाँ नहीं वो मरी नहीं थी, बीमार थी ज्यादा, एकदम सीरियस थी, उसको देखने गई थी वो। हाँ, तभी क्या हो गया, और डेक्सा में मुंह मारा तो सिंग में फंस गया डेक्सा। अब इधर उधर भागने लगी तो ये दरवाजा खुला था, अंदर आ गई घर में। अब घर में आवे तो उधर दीवार में लगे, इधर दीवार में लगे, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। ये बुढ़ी ने सोचा यमदूत आ गए लड़की को ले जाने के लिए। यमदूत आ गए, अब उठ के भागने लगी, कहती मैं नहीं, वो लड़की उधर पड़ी है, उसको ले जाओ। मैं नहीं, लड़की उधर पड़ी है। उसके पहले तो बोलती थी मेरा भी उम्र ले लो, इसको जिंदा कर दो, ऐसा वैसा सब बोल रही थी, लेकिन जैसे ही गाय अंदर आई तो ये जान लेके भागने लगी और बोलती है लड़की उधर पड़ी है, उसको लेके जा। तो कहते हैं ऐसे ही जब ऊपर आती है तो पता चलता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक परीक्षा लिया कि ये ममता कितना टाइम तक रहती है। एक बच्चे और कोती को, बंदर को, बच्चे वाला बंदर को एक टब में, माने बड़ा टैंकी था, उसमें डाल दिया और पानी छोड़ने लगे।
जैसे जैसे पानी ऊपर आवे वो बच्चे को ऊपर उठावे, और जब यहाँ तक पानी आ गया तो सिर पे बिठा लिया बंदर। अब जब वही डूबने लगी तो उसने क्या किया, बच्चे को पैर के नीचे रख के ऊपर खड़ी हो गई। तो कहते अरे अपने जान से प्यारी दूसरे की जान नहीं। कहाँ तक ये मोह है, प्रेम है इतना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय देखा है बंदर को अंदर छोड़ के। तो कहते हैं ऐसा दुनिया का रंग सब कच्चा है। वही महात्मा कहते हैं कि जगत का रंग सब मैला, छुड़ा ले मान यह कहना। कहते हमारा कहना मानो और इससे अपने ख्याल को हटाओ, वो मालिक के नाम से जोड़ लो। So Swamiji Maharaj says that the color of this world, the color of attachments, it is not permanent and it is dirty. So listen to me and you leave this color, leave these attachments. So there is a story that I remember, which used to be said, ज्यादा बीमार told. थे। There was a there was a girl who was quite ill, and her old mother, she was taking care of her, and she used to keep saying that, or keep praying that, give make my girl well, and whatever life I have left, you give that life to that girl and let her have a good life. She used to keep saying that, keep praying like that. And so once it so happened that there was a large utensil which for cooking large quantities of food, and it had become black from down, and that whole utensil was kept outside. So one buffalo came and he put his mouth inside that utensil to eat food, whatever was there inside, and his horns got stuck in that. So it looked like a very odd animal with a huge utensil in the front, and the body of a buffalo behind. और दरवाजा And- खुला था, अंदर आ गया। And it could not see anything, so it entered the house from the door which was open. Now the lady who was sitting in the outer room, she saw this very vague creature coming in, black and with no face, and at a utensil in the front. So she felt that it is the angel of death which has come. So as soon as she saw that angel of death, or she thought it is the angel of death, she immediately said, that girl is sleeping inside. I am out. I'm the old lady. The girl is sleeping inside. You can take her. So that is how short-lived our relationships and our attachments are. Another experiment that was done during the British regime here, they wanted to see how much is the love and affection between a mother and a child. And they placed a monkey with her child, with a small with her child in a tank, and they started filling that tank with water. So when that monkey saw that water level was rising, she picked up the child and held it close. Then the level kept on going up. So she, at some point, took the child and placed it on her head, and so that he could breathe and both could stay alive. Then when the level of water went above her head, she placed the baby below her feet and stood on the baby. So it is always everyone is very attached only to themselves. So all these attachments are very short-lived. Therefore, Swamiji Maharaj says that the color of these attachments is not permanent. It is short-lived and it is dirty. So don't play in this color. Don't play in these attachments and get free from them. दूसरा भोग संसार कोई दिन के सहज में त्यागते चलना शरण सत गुरु गो दृढ़ कर करो यह काज पिल रहना। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, दुनिया के
जो भी सामान है, भोग विलास हैं, जो भी ऐश आराम के सामान मिले हैं, ये 4 दिन के हैं, माया के हैं, आपके नहीं। आपके प्रारब्ध कर्मानुसार 4 दिन के लिए दिया जाता है। आप जाने के समय उन सामान को यहीं छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि ये आपके नहीं है। आपके प्रारब्ध कर्मानुसार दिए जाते हैं सबको, और वो सामान जो माया के हैं उनको यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। तो वही आप इशारा कहते हैं, सहज में त्यागते चलना। ये कोई दिन के हैं, इनको सहज में त्यागते चलना। ये सहज में इसका त्याग करो और सच्ची भक्ति करो कि फिर हम इस दुनिया में पैदा ना हो। So he says that the possessions that you have, these are not yours. These truly belong to Maya. And you have just been given the opportunity to be in possession of these things because of your fate deeds. And therefore, they are only going to be there but for a few days. And eventually, you have to leave all these things behind when you die and move on. So Swamiji Maharaj says that you, in the normal course, start sacrificing all these things, start leaving your attachment to all these possessions because they are not yours. तो कहते हैं, शरण सदगुरु गहो दृढ़ कर, करो यह काज पिल रहना। कहते हैं ये अपने दिल से निकाल के और सदगुरु का शरण सच्चे दिल से धारण करो, और जो वो कर रहे हैं उस पर अमल करो। So he says that in your heart you break away from the attachments of these possessions and surrender at the feet of the master. कहते हैं अगर ऐसा हम करते हैं तो हम इसी जन्म में अपने घर सतलोक सचखंड जा सकते हैं। And if we do this, then in this life itself we can go to Sachkhand Satlok. शरण सतगुरु गहो दृढ़ करो यह ताज पिल रेना सूरत मन काम अब घट में पकड़ दून जान दर गगना। तो कहते इस तरह से गुरु के चरणों में प्रेम प्यार लगा के सुरत शब्द का अभ्यास करो। अगर प्रेम प्यार रहेगा तो आपका अभ्यास बनेगा, और धीरे धीरे अपने रूह को ये 9 दरवाजे से निकाल के 10वें में, माने ये 6 चक्कर से पार करके 7वें में आ जाओ, और वो शब्द जो सतलोक सचखंड से आके यहाँ टिका हुआ है उसमें अपने जो उससे जोड़ दो सूरत को, काम बन जाएगा। So he says that you do the practice of Surat Shabd Yog and have the love and affection towards your master. Only when you have love and affection towards your master, you will be able to successfully do that Surat Shabd Yog, and you will be able to focus your attention and take it out of the 6 chakras below and come to the 7th chakra. And there, the holy sound current which is coming from God Almighty is resonating, and with the grace of the master, that sound current will get manifested. कहते हैं कि जब हम रोज रोज शब्द सुनते हैं 15-20 मिनट और भजन करते हैं, तो हमारे आत्मा के 2 अंग हैं, एक देखने की ताकत, सुनने की ताकत। देखने को निरत कहते हैं, सुनने को सुरत कहते हैं। ये जागृत हो जाती है, और हमारे चढ़ाई में हमारी आत्मा के आंखों से हम उसके प्रकाश को देखते हैं, हमारे आत्मा के कानों से हम अंदर के शब्द को सुनते हैं, और ये 2 आधार ही हमें ऊपर लेके जाता है। Where there are 2 faculties of the soul has the faculty of listening and seeing. The faculty of listening is called Surat, and the faculty of seeing is called Nirat. So it has these 2 faculties of Surat and Nirat. When at the time of initiation, the practice is explained as to how to awaken these 2 faculties of Surat and Nirat. We do those practices, and gradually we start awakening those 2 faculties. So eventually, when the soul's attention goes within and the holy sound current is manifested, it is with the
ears of the soul and the eyes of the soul, that it sees this holy sound current and hears this holy sound current, and then it rides on this sound current and goes back to God Almighty. जब अंदर का गुरु दर्शन के बाद, गुरु प्रकट होने के बाद में जो प्रकाश और शब्द प्रकट होता है, उसके सुनने से हमारे एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं और हमारा मन एकदम हल्का शीशे जैसा निर्मल हो जाता है. When that holy sound current is manifested by the grace of the master, the light and the sound, when the mind gets in connection with that, it sheds off the karmas, a lot of not only this life but of millions of previous lives, the filth of those karmas which is cast upon the mind, that gets cleaned in an instant, and the mind becomes very crystal clear. फंसे तुम जाल में बारी, बिना इस युक्ति नहीं खुलना, गुरु अब दया करे कहते, मान यह बात चित धरना. फिर वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, फंसे तुम जाल में भारी और बगैर इस युक्त नहीं खुलना. कहते हैं कि ये जीव, ये आत्मा इस काल और माया के जाल में आके एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के कर्म करके मलिन हो चुकी है और आज 84 के जेल खाने में भटक रही है. कहते इससे निकलने के लिए बस शुद्ध शब्द अभ्यास, जो शुद्ध शब्द अभ्यास गुरु ने दिया है वही एक रास्ता है. He says that this the soul is very badly entangled with the mind in this ocean of life and death, and in all the attachments and everything around it, and it is impossible to get out of this attachment other than by the practice of the Surat Shabd Yog. That is the only way that one can untangle and get out of this this ocean of life and death. क्योंकि बगैर गुरु के कृपा के हमारा अटैचमेंट माने मोह दूर नहीं होगा और मोह दूर हुए बगैर जीव मुक्त नहीं हो सकता. कहते हैं कि अगर हम भक्ति सुर शब्द अभ्यास करते हैं तो संत अंदर ही है, वो दया करते हैं. हाँ, और उनकी एक दया दृष्टि से हमारा मोह हमेशा के लिए दूर हो जाता है. हालांकि हमें तो बाबा जी की कृपा, जैसे मैंने कहा, बॉम्बे जाने के लिए 1.5 महीने हो गए डर के मारे. जब मैंने पूछा, क्योंकि हमारा मन हमें धोखा दे रहा था कि बॉम्बे जाना, नौकरी करना, पैसा कमाना, माँ बाप से मिलना, ये सब मोह पैदा हो गया. 6 महीने हो गए थे आश्रम आके. तो हम नाइट ड्यूटी अच्छा करते थे और बाबा जी हमें छोड़ना नहीं चाहते थे. जब मैंने पूछा, महाराज आपने कहा था ना आने के बाद भेज देंगे, 1.5 महीना हो गया आने के बाद, तब पूछा डर के मारे. तो बाबा जी कहते क्या नौकरी करने का है? हम बोला हाँ महाराज, थोड़ा दिन तो करना पड़ेगा, क्योंकि सच बोला. तो बाद में बाबा जी ने ऐसे ही देखा, बोला अरे क्या 400-500 की कोई नौकरी होती है? ऐसा देखते ही मेरे अंदर जो वो था भावना, वो किधर उड़ गया. फिर सपने में वो मुझे याद नहीं आया कि मेरा भी कोई परिवार है, मेरा भी कोई घर मकान है, कोई गांव है और मुझे नौकरी करना, पैसा कमाना, ये जो ख्याल था हमेशा के लिए निकल गया. फिर 14 साल तक हम भजन बंदगी में बिता दिए और घर का ख्याल नहीं आया. तो कुछ संतों की एक दया दृष्टि काया पलट कर देती है. So it is these attachments which bring us again and again in this life and keep us entangled here. When we do the practice, we do our bhajan simran daily, then the masters shower their grace upon us and they also loosen those attachments and free us from those attachments. Until we get free from those attachments, it is not possible for us to get salvation
and leave this ocean of life and death. So I often give this tell you about what happened with me. That when I was in the ashram, after staying there for a few months, it this feeling started building up within me to go to Mumbai from the ashram, from the Kengeri ashram. And I happened to ask Babaji whether I could join him in his tour to Mumbai. But because I used to do this seva of taking care and doing this night duty, Babaji told me that it won't be right if you also come along this time. Instead, let me finish my tour, and after that, I will send you to Mumbai. And meanwhile, I had built up everything within. The attachment had become so strong that every day I was thinking about what I will go and do in Mumbai, whom I will meet, what I will do. So that had all built up. Now, after Somnath Babaji came back from the tour, it took nearly 1.5 months for me to finally muster the courage to ask him uh, whether I could go to Mumbai. And that thought had become very strong within me. So this is how a master frees us from our attachment. So when I said this, Somnath Babaji asked me whether I was just planning to visit, or I was also planning to do some service and do some job in Mumbai. So I told him the truth, because that's what I had been thinking. So I told him, yes, I am planning to take up a job there for some time. Then he gave me such a look, and he looked at me like, and he told me that, are you seriously going to do a job of 300 or 400 rupees, and you really want to do that? And this statement of his completely shook out all that attachment, all that things I had built up over those months. And suddenly all that vanished. I don't know where. It never came back. So after that, I never had the thought or the feeling of going back to Mumbai or to my family, or going and taking a job somewhere or doing anything. And I stayed back in the ashram for 14 years after that, and I did seva there. So that is the grace of the master to have uh, got me freed from any kind of attachment. अगर वो दया नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते. If that had not happened, if that grace would not have been showered, then I would not be sitting here. भटक में क्यों मरे खोते, कहीं नहीं पीक तुम लगना, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक याओ ना. जो कहते हैं इसलिए ये काल का जाल बहुत कठिन है, इसमें सच मान के जीव फंस जाता है, और करोड़ों जिंदगी जन्म जो इसमें डुबकी लगाते रहता है. पैदा होना मरना, पैदा होना मरना. तो महात्मा के समझाते हैं कि इसे अपने अंदर से हटाओ और भजन सुमरन करो. जो गुरु कहता है सुर शब्द का अभ्यास करो, वही एक रास्ता है जो आपको इस भवसागर से पार करेगा, आपको जन्म मरण से मुक्त करेगा. So this net of duality of Kal is something which is impossible to get out of. We start believing this reality that we see, and it is impossible to break away from this reality. And therefore, we spend life after life, and crores of lives, millions of lives we have spent in this net, in this duality, or in this delusion. So Swamiji Maharaj says that the only way you can get out of this is by doing that Surat Shabd Yog. You will be able to stand aside and get salvation from this ocean of life and death. क्योंकि संत रात दिन हमें इस दुनिया में दुखी देख के उनको दया आती है. वो चाहते हैं जैसे हमें सुख शांति मिली, इन्हें भी मिले, और वो सत्संग के जरिए हमें जागृत करने की कोशिश करते हैं. उनका कोई स्वार्थ नहीं होता.
the masters are in a state of perpetual bliss. When they see us suffering, they see the jivas suffering so much, they feel that indeed those jivas also should be freed from that suffering, so they can also enjoy the same perpetual bliss that the masters are enjoying. And therefore, they shower their grace and show the way to the jivas to get free from this bondage. They have no selfish interest in doing so. दुइया दूर हो जावे दृष्टि ज्योत में दरना श्याम तज से तकोगे ना सूरत को तान धुन सुनना. तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस तरह से अपने ध्यान को दुनिया से हटाओ, सुर शब्द का अभ्यास करो और धीरे धीरे ये 6 चक्कर को पार करके 7वें में आ जाओ. आपकी तीसरी आंख खुलेगी, आपको अंदर 2 रास्ते नजर आएंगे. जैसे ही आपकी तीसरी आंख खुलेगी तो 2 रास्ते नजर आएंगे, एक बाईं तरफ श्याम वर्ण का और एक दाहिने तरफ सफेद कलर का. So Swamiji Maharaj says that get your attention from the outside to the within, leave all the outside attachments and come inside. And when you are able to focus your attention at the eye center and open your third eye, you will see 2 paths that are laid out ahead for you. One is on the left side, which is of a श्याम which is not Black as color. illuminated, and the right side, which is more illuminated. तो कहते हैं श्याम तज श्वेत को गहना सूरत से तान धुन सुनना. तो कहते हैं ये श्याम को छोड़ दो, ये नरकों में जाने वाला है. कहते हैं श्वेत के रास्ते से ऊपर चलो, ऊपर का आवाज को पकड़ो, ऊपर चढ़ो. So when you are faced with these 2 paths, when your third eye opens, he says that take the brighter one, which is to your right. And when you go on that path, you will get the manifestation of the holy sound current on that, which will take you further up. तो कहते हैं इस तरह से आपकी रूह पर जाएगी. एक बार वो शब्द प्रकट हो जाएगा, फिर कभी बंद नहीं होगा. गुरु का दर्शन हो जाता है, ज्योति प्रकट हो जाती है, शब्द प्रकट हो जाता है गुरु के कृपा से. तो वो शब्द कभी बंद नहीं होता. आप रात को सोए हैं, वो शब्द चालू रहेगा. आप जागते हैं, शब्द चालू. वो इतना जोर से आवाज आता है, उसके सामने बाहर का आवाज भी सुनाई नहीं देता. So when we manifest, when we go within, we first manifest the radiant form of the Master, and with His grace, we manifest the Jyoti, and we manifest the holy sound current. And once we have manifested these, then the sound current will never stop. It will always be continuously resonating. It resonates even when we are sleeping and when we are awake. And it is so loud that we may even not listen to what is the sound outside. And we hear that holy sound current constantly resonating inside. तो कहते हैं आपके घट में प्रकाश हो जाता है. जैसे ही वो ज्योति प्रकट होती है, तो आपके घट में जो करोड़ों जन्मों से अज्ञान रूपी अंधेरा था, आंख बंद करो अंधेरा, अभी आंख बंद करो तो उजाला नजर आता है, और आपके अंदर अज्ञान रूपी अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाता है. हाँ, आपके घट में प्रकाश हो जाता है. So when that Jyoti is manifested, when the Master graces us with manifesting of that Jyoti inside, then the within gets illuminated. Right now, when we close our eyes, we see the darkness of ignorance of so many millions of lives. So that darkness gets dispelled completely. And if we close our eyes in that, after we have manifested the Jyoti, then there is light at all times within. पंख के द्वार दस बैठो त्रिपुटी जाय कर लेना सुन चढ़ जाद शोभा
सूरत से मानसर नाना। तो कहते हैं अब 8वें चक्र से 10वें चक्र यानी ब्रह्म में जाने के लिए एक बंक नाल है, यन के आकार का है। पहले हमारी रूह आत्मा ऊपर चढ़ाई करती है, फिर थोड़ा क्रॉस नीचे उतरती है, फिर ऊपर जाती है, यन के आकार का है, वो बंक नाल कहते हैं। वो जो 8वें और 9वें को जोड़ता है और फिर हमारी रूह ब्रह्म में पहुंच जाती है। So, to go further, he says that the from the 8th level or the 8th plane to go to the 9th plane or the 9th level, there is a bunk canal. There is a tunnel which is in the shape of an N. So first the soul ascends to the top, then diagonally it descends, and then again ascends to the top. So this bunk canal connects the 8th level to the 9th level, which takes us to the level of Brahm. और ब्रह्म से फिर पार ब्रह्म जाके मानसरोवर स्नान करके आत्मा निर्मल हो जाती है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, सब आत्मा एक ही है। यहाँ अपने कर्मों के भुगतान के लिए एक एक जगह एक एक शरीर पकड़ के बैठी है। आत्मा शब्द और प्रकाश रूप है। So from the Brahm, then it proceeds to the Par Brahm, and it takes the dip in the holy Mansarovar, where it sheds off all the coverings and comes into its true essence of light and sound. So only here there is a distinction between male and female. After the soul takes a dip in the Mansarovar, there even that distinction is over, and there is it is only in the form of its true essence of light and sound. पार ब्रह्म मानसरोवर स्नान करके सब आत्मा का एक ही रूप हो जाता है। सब में 12 सूर्य का प्रकाश बाहर आने लगता है और वहां कोई भी शरीर नहीं रहता है। आत्मा शब्द और प्रकाश रूप में रहती है। So there, once the soul has taken a dip in the holy Mansarovar, it has the luminance of 12 suns, and it has no body. There is no male or female or no body also. It is only in the form of light and sound. All the souls are in the same way, in the only having light and sound. वहां जितनी भी बहुत सारी आत्माएं हैं, सब प्रकाश और शब्द रूप में रहती हैं। वहां कोई शरीर नहीं, शरीर ब्रह्म तक है। हम 8वें चक्कर में सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल है। अंदर गए 8वें में सूक्ष्म है, ब्रह्म में गए तो कारण है, पार ब्रह्म में गए शरीर खत्म। वहां अमृतसर स्नान करके आत्मा निर्मल हो जाते हैं। So we have currently the physical body, and when we come to the 8th level, we shed off the physical body and enter the astral body. And from the 8th, when we go into the 9th, we shed off the astral body and get into the causal body. So these three bodies are covering the soul. And after that, when the soul dips in the Amritsar, in the holy Mansarovar, then it sheds off all the three coverings and it comes in its true essence of light and sound, which is the true essence of the soul. जैसे अभी 1000 कैनल बोल्ट्स का बल्ब है और बल्ब से बहुत उजाला हो रहा है। आपने एक चादर तान दिया साइड में, अब उजाला कुछ कम हो गया है, अंदर 1000 बोल्ट्स, और फिर दूसरा चादर तान दिया तो और भी बाहर अंधेरा हो गया। अभी तीसरा तान दिया तो बाहर पूरा अंधेरा हो गया। यही हालत हमारी आत्मा की हो गई। पहले जब ब्रह्म में आई, कारण शरीर में उतर गई, एक पर्दा चढ़ गया आत्मा पे शरीर का। 8वें मंडल में आई, स्थूल का पर्दा, सूक्ष्म शरीर का पर्दा चढ़ गया। अब ये स्थूल शरीर में आके यहाँ 10वें दरवाजे में ये तीसरा पर्दा चढ़ गया। है तो 1000 कैनल का बोल, 12 सूर्य का प्रकाश है आत्मा में, लेकिन वो आत्मा अंदर है 3 कवर में। अब फिर जैसे जैसे चढ़ाई करते हैं अपना प्रकाश ही बाहर आने लगता है और पार ब्रह्म में जाके पूरा स्नान करके आत्मा का 12 सूर्य का प्रकाश बाहर आ जाता है और सब आत्माओं में 12 सूर्य का प्रकाश रहता है। उसे हंस कहते हैं। So it is, if we visualize, there is a 1000-watt bulb which has a lot of luminance and it lights up the whole hall or room.
but when we cover it with a blanket, then that light will reduce. Then we cover it with another blanket, that light will further reduce. And by the time we cover it with a third blanket, it will become dark. So, in the same way, the soul, which has the luminance of 12 suns, when that has entered the realm of Kal, it has entered the causal, Brahm. it is first covered by the causal body, and the brightness reduces with that. Then, further, when it comes to the astral, it is covered by the astral body, so the light further reduces, and then it enters the physical body where the light is completely gone. So that way, these three bodies are covering the light. When these three bodies are shed off, it comes in its own form of light, and it starts radiating the light of 12 suns. Like that, all the souls there, which have taken a dip in that Mansarovar, all of them have the luminance of 12 suns, and it is called Hans at that stage. महासुन्न चोक अंधियारा वहाँ से जागू बसना लोक जोते चलो सज के गहो जाए धुन दीना तो फिर कहते हैं कि हमारी रूह गुरु के साथ मिलके, क्योंकि हर मंडल में गुरु हमारे साथ ही रहते हैं। जो आपको यहाँ नामदान देगा, अंदर में भी हर मंडल में भी आपके साथ रहेगा। तो गुरु लेके ऊपर जाते हैं, महाशून्य अधियारा, उसको अंधेरा बताते हैं, क्योंकि वहां जाने नहीं देते हैं, अलग से लेके जाते हैं और भंवर गुफा में ले जाके छोड़ देते हैं, और वहां की आवाज सुनाई देती है, वहां के मालिक का दर्शन होता है, फिर वहां से ऊपर सतलोक सचखंड ले जाते हैं। So the master then takes the soul further. The master is with the soul at all stages. The same master who has initiated you here, that Sadguru, is there with you at all the levels, and he handholds you till he takes you back to God Almighty. So after the Mansarovar, he takes you further into the Mahakal or the Sun, and it is referred to as a dark place, but the masters take you purposely from that place and leave us in the Bhavar Gufa, and in the Bhavar Gufa he makes us meet the Lord of that plane, and has us to listen to the sound of the Bhavar Gufa and the light of the Bhavar Gufa, and from there he takes us to Sachkhand Satlok. लोक जोते चलो सज के गहो वहाँ जाए धुन दीना अलग और गम के पारा अजब एक महल दिखलाना वही राधा स्वामी से मिलना हुआ मन आज अति मगना। तो कहते हैं इस तरह से रूह चढ़ाई करते हुए सतलोक सचखंड, फिर आगे अलख अगम जाती है, और आगे का देश बहुत सुंदर है, जहाँ अनामी पुरुष विराजमान है। उसी को संतों ने राधा स्वामी ही नाम रखा है, लेकिन वो अनामी मतलब उसका कोई नाम नहीं। आप जिस नाम से भी प्रेम से बुलाओ बोलता है, उसको प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। So after Sachkhand Satlok, the Satpurush takes the soul further and takes the soul to Alakh Agam and then Anami. Anami, the soul finally has the darshan of Anami, or the nameless God Almighty, or what the saints call as Radha Swami. So there the soul gets the darshan of God Almighty or the nameless one. कहते वही परमात्मा का वास है, और ये सारे आत्माएं वहां से आई हुई है। ये ब्रह्म पार ब्रह्म से नहीं आई,
ब्रह्मा विष्णु से इनका कोई मतलब नहीं, उनको ड्यूटी है। माया ने उन तीनों को ड्यूटी दिया है, ब्रह्मा को पैदा करने का, विष्णु को पालन करने का, शिव को संहार करने का। इन तीनों अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी कभी अवतार लेके बैलेंस बराबर करने के लिए आना पड़ता है त्रिलोकी में, लेकिन ऊपर की जो रचना है वो बहुत अलग है। वो परमात्मा वहां बैठा है जिसने ये सारी दुनिया का निर्माण किया है, और ये आत्मा वहां से आई हुई है, ये ब्रह्म पार ब्रह्म से नहीं आई है। So the soul has come from Anami. It has come from that nameless God Almighty, who only wants the devotion of the soul and the love of that soul. And we can call him with whatever name we want. So that is our true home. That is the home of the soul. It is not to be identified with this world, with these three worlds here, or with the gods of Brahma, Vishnu, Mahesh, which people identify the souls or the jivas with, because these three gods have been given duties here to take care. So Brahma has the duty of creation, Vishnu has the duty of sustenance, and Shiva has the duty of destruction. That is how the cycle of life and death works. So these are only doing their duties, these three gods. And the soul is not someone that belongs from here. The soul belongs to God Almighty, who has made this entire creation, including these three worlds and everything around. अलक और गम के पारा अजब एक मन दिखलाना वही राधा स्वामी से मिलना हुआ मन आज अति मगना तो कहते हैं मन बहुत खुशी हुआ, बोले कि मन तो नीचे है, वहां तो मन नहीं रहता है, वहां तो आत्मा बहुत खुश हो गई है परमात्मा से मिलके। है कहते हैं उसको कितनी खुशी हुई कि उसका कोई हिसाब नहीं। जैसे एक मेले में बच्चा भटक गया एक, और 5-6 दिन से बाप पिता ढूंढ रहा है, और 5-6 दिन के बाद वो बच्चा मिल जाए तो बच्चे को कितनी खुशी होती है। कहते हैं ऐसे ही आत्मा अपने पिता परमात्मा से मिलके खुश होता है, कई जन्मों से जो दूर बिछड़ा हुआ था और काल माया के जाल में आके फंस गया था, हाँ उसको इतनी खुशी होती है जिसका कोई बयान नहीं। So Swamiji Maharaj says that when the soul meets God Almighty, it becomes so happy meeting God Almighty. It is like a child which is lost from his father in some exhibition or some fair, and for 3 or 4 days, if it is lost and separated from his father, then when he actually gets to see his father and he goes back to his father, the kind of happiness is immeasurable. And that is the same way the soul, when it meets God Almighty, it is boundlessly happy to meet its father. उतना ही है, वही है। वही राधा स्वामी से मिलना हुआ मन आज अति मगना राधा करो बिना
युग त्रेता द्वापर गीता काहू न जानी शब्द की रीता कल युग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी जीव काज स्वामी जग में आए भव सागर से पार लगाए तीन छोड़ तापद दीना सतनाम सत गुरुगत चीना जगमग ज्योत ओत उजियारा गगन सोत पर चंद्र निहारा श्वेत सिंहासन चंद्र निराले अनहद शब्द दैवतुन गाजे शरणाक्षर की अक्षर पारा विनंती करे दास तुम्हारा लोक आलोक पाहु सुख दामा चरण शरण दीजे विश्रामा करू विनंती लोकर जोरी स्वामी लोकर जोरी आज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी हाँ देव। हाँ भाई, आज ये प्रोग्राम यही समाप्त हो रहा है। उस संगत से भी हमारी यही विनंती रहेगी कि घर में भी जाके इसी तरह से कार्यक्रम चालू रखें, रोज रोज सत्संग सुने, रोज रोज भजन सुमरन में समय दें। ये अपना काम है, जैसे हम पराये काम के लिए समय देते अपने काम को भी देना चाहिए, जिससे मानव शरीर में आने का मकसद पूरा हो। और हमें कभी ये ना सोचना चाहिए महाराज जी नहीं हैं। महाराज जी आपके साथ पहले भी थे, आप भी हैं, आगे भी रहेंगे। संत कभी मरते नहीं, उनकी आत्मा अमर होती है। और हमारे लिए वो कितना बड़ा तपस्या करते हैं ब्रह्म में बैठ के, और वहाँ से हमारी देख रेख कर रहे हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि महाराज जाके बहुत दिन हो गए। हम ही उनसे दूर होके बहुत दिन हो जाता है, हम उनको भुला देते हैं। अगर हम उनकी याद बनाए रखे तो हमें इतना दूर नहीं लगेगा, हमें नजदीक ही रहेगा। बताओ। This program has come to an end. I hope that all of you, all the Sangat, when it goes back home, all of you continue to do meditations and continue to listen to satsangs every day, like we have done in this program. So you continue with the program in your respective homes.
and we should never feel that our masters have left us, because our masters, हाँ, they are Sadguru is immortal, हाँ, and the Sadguru never dies. So we have to be mindful of that and constantly be in their remembrance. It is a great sacrifice that the masters have done for us, because they sit in the Brahm, हाँ, and there, from there, they are protecting all the souls and all their initiates हाँ. from there. So it's such a great sacrifice that they have left their place and they are sitting in the Brahm to take care of everybody. So they have not forgotten us. Our masters are very much uh, uh, keeping a watch on us and taking care of us every second. It is us who have forgotten them, and it's for long periods that we have forgotten our masters. So we have to refresh that love and refresh that remembrance of the masters, and automatically we will be able to feel them uh, uh, very closely. तो इसी तरह से प्रेम प्यार बनाए रखें, उनकी याद में समय बिताएं। जब आप ड्यूटी पे होते हैं तो ड्यूटी करें, और ड्यूटी से आने के बाद में आप उनकी याद में रहते हुए घर का कारोबार करें। खाना बनाते समय सुमरन करें, घर की सफाई करते समय सुमरन करें। सारा कारोबार सुमरन करते हुए करेंगे तो आपका हमेशा भजन में ही जाएगा सारा दिन, और आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। So you spend your time doing your bhajan simran, just like you're doing your duties outside. You do this duty, which is your true duty and the true purpose for which you have been given this life. So try to do your bhajan and simran as much as you can. Do your simran when you're traveling, when you're cooking food or you're cleaning your homes, and at all times try to do as much simran as you can. When you do your simran like that, it is that you are attached with your bhajan throughout the day, and your meditations will also be much better if you do it like this. तो जैसे आपका संगत में आके फायदा मिल रहा है, ऐसे आप अकेले में भी फायदा उठा सकते हैं। हमेशा अपने मास्टर, अपने गुरु से जुड़े रहें, भजन सुमरन में समय जरूर दें। So just like you benefit by a program, that way at home also, if you are in this state of mind, you will be continuously connected with your master, and you will get the same benefit. आप लोग काफी दूर दूर से काफी खर्चा करके आए हैं, यहाँ पे आके प्रोग्राम को सार्थक किया। हम बाबा जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आपके ऊपर वो अपनी दया में और बनाए रखें, और भी आपके अंदर भक्ति और प्रेम प्यार बढ़े कि आप आगे बढ़ें। All of you have come from such long distances, and you have spent monies to come and participate in this program and make this program successful. I pray at the feet of the masters that they shower grace upon all of you, so that your meditations improve, your devotion improves, and you continue on this path of devotion. और आप लोगों ने जो 10 दिन 20 दिन यहाँ बिताया, उसमें अगर कोई खामियां हो, कोई गलती हो गई सेवादारों से, किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया, या उनके कार्यों से अगर किसी का दिल दुखा, तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं कि आप लोग कोई भावनाएं लेके नहीं जाए, प्रेम और प्यार लेके जाए। In this 20 days that you have been here, if there has been any incident which has upset you, or if any sevadar has spoken any harsh words or any of their actions has upset you, then please don't continue to be upset on that. Please forgive that, and carry happiness back with you, and carry the joy back with you. राधा।
फोन लेके जाएंगे स्टार्ट There will be darshan after the langar. The langar will immediately follow after this. लिफ्ट के पास बंद कर लिफ्ट के पास बंद कर एंड कर लिफ्ट